See, this is a very important question, very simple question, but the basic question. They say derive the relation between Kc and Kp. Both are reversible reactions. Suppose a given reversible reaction for us is this. Okay, two reactants A and B, in proportion small a and small b. They are reacting and they are producing two products, C and D, in the proportion of small c and small d. As just now we have derived, K equilibrium is basically concentration of product raised to the respective stoichiometric coefficients upon concentration of reactant. We know, okay, this general equilibrium constant. For any general reaction. Now there are two conditions may prevail. The first condition is that the given reactant and product, all these, they are in liquid form. If all given reactant are in liquid form, at that time the concentration which we take is, instead of writing square, we may write concentration of C raised to C, concentration of D raised to D, concentration of A raised to A, and concentration of B raised to B. In general, C represents concentration in molarity. Concentration in molarity. अगर ये चारों के चारों लिक्विड में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर करेंगे हम? मोलारिटी. मोलारिटी के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे हम क्या लिखेंगे? कैपिटल C. ओके, कैपिटल C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू C, लाइक दैट. एंड दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज जो दिए गए हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में है. वो कॉन्सेप्ट है. तो गैसियस फॉर्म में हम उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो प्रेशर में मेजर करते हैं. इसमें मेजर करते हैं pressure. So instead of writing concentration, okay, we write pressure of C raised to C, pressure of D raised to D, pressure of A raised to A, partial pressure actually, partial pressure of B raised to B. And one more thing, we don't write K equilibrium at that time. We write specifically Kc for this and Kp for this. Kc indicates the reactants and products are in liquid state and Kp indicates they are in gaseous state. We have to derive relationship between these two. And here P generally talks about the partial pressure. Partial pressure in bar. Partial pressure in bar. Correct. Now, we have this relationship PV equals to nRT, which gives us another relationship P equals to N by V upon R, N by V into RT, and we also know N by V equals to concentration in molarity, moles per volume, moles per volume. So, therefore, P equals to CRT. Is this understood? P equals to क्या मिला आपको? CRT. Correct है ना? So hence, if I continue the same point, therefore PA will be equal to क्या मिलेगा? CART. P equals to CPRT. PC equals to CCRT and PD equals to CDRT. Correct or not? Are you following that better? All of you boys, are you following? Anyone who is not able to understand, boys? Girls? Are you getting this? Okay. If we replace this thing, all this value in Kp's formula, we are going to put it over there. So therefore, Kp which we had
PC raised to C, PD raised to D, PA raised to A, PB raised to P. We may rewrite this instead of PC. We may rewrite CC RT raised to C instead of, because PC equals to CCR, correct or not? So instead of PC, what we can write? CCRT raised to C. Same way, instead of PD, we may write CT RT raised to D, PA CA RT raised to A, CB RT raised to, correct or not? We'll continue further. In this term, if you see, RT is common everywhere. So if I take RT aside, okay, I said RT, not RT. RT raised to C plus D minus A plus B. Correct or not? Are you getting this? Okay. And here CC raised to C, CD raised to D, CA raised to A, and CB raised to B. Isn't it true? Are you able to get this? Okay. But भाई साहब ये वाला पार्ट कैसी है? नहीं सुनना है? ये क्या है? ठीक है. So CC raised to C, CD raised to D, CA raised to A, and CB raised to B की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कैसे? Okay, let's do that. So here Kp equals to instead of this we are going to write down Kc into RT raised to delta Ng, where delta Ng equals to, okay, T plus D minus A plus B. Actually C plus D, they are the moles of product, C and D, and A and B are moles of reactant, or rather say gaseous moles of product minus gaseous moles of reactant. Correct or not? So Kp equals to, ये हमारे पास एक अच्छा सा डेरिवेशन डिराइव हो चुका है. Correct? Kp equals to Kc RT raised to delta Ng. That's the derivation which we need. Okay. But however, there are further thing is required. Okay. See, एक चीज जैसे समझिए, we were talking about this reaction. Okay, ऊपर मैंने लिख रखा है, आपके रेफरेंस के लिए मैं वापस लिख रहा हूँ. For this reaction हमने ये रिलेशनशिप दिया है, Kp is RT raised to delta. However, there are two conditions. ये जो पूरा रिएक्शन हमारे पास है, ये रिएक्शन के अंदर ओके दो कंडीशन हो सकती है. पहली कंडीशन ये है कि इसके अंदर डेल्टा एन जी जीरो है. डेल्टा एन जी जीरो मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट साइड पे जितने गैस के मोल्स है आपके पास, उतने ही रिएक्टेंट साइड पे एनपी माइनस एन आर. ओके, डेल्टा एन जी जीरो हुआ. इफ डेल्टा एन जी इज जीरो, देन एट दैट टाइम Kp equals to Kc RT raised to 0. And NG raised to 0 is what? 0? Not 0, it's 1. Correct? So that's equals to RT raised to 0 is 1. So Kp equals to Kc. So when delta Ng is 0, at that time Kp equals to Kc. डेल्टा Ng 0 दो केस में हो सकता है. ओके, या पहला केस ये हो सकता है कि Np and Nr इक्वल है, मतलब जितने गैस के मॉलिक्यूल्स मोल्स सॉरी नॉट मॉलिक्यूल्स जितने गैस के मोल्स प्रोडक्ट साइड पे उतने ही गैस के मोल्स रिएक्टेंट साइड पे. ये एक कंडीशन. या तो दोनों में से किसी के पास गैस के मोल्स ही नहीं, तभी भी डेल्टा एन जी जीरो हो सकता है. इन बोथ द केसेस व्हेन डेल्टा एन जी इज जीरो Kp इक्वल्स टू Kc. सेकंड थिंग, अगर डेल्टा एन जी जीरो था तो ये था, बट अगर जीरो नहीं है तो इफ डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू जीरो, obvious है Kp is not equal to Kc.
जीरो होगा तो ही इक्वल रहेगा. Okay. Then again there are two conditions. डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो. डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो तभी हो सकता है कि प्रोडक्ट साइड पे गैस के मोल्स रिएक्टेंट साइड पे गैस के मोल से ज्यादा होंगे. दैट टाइम केपी केसी से बड़ा होगा. याद रखना बिकॉज ओके हमारे पास ये रिलेशनशिप है केपी इक्वल्स टू केसी आर टी रेस टू डेल्टा एन जी. अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऑब्वियसली ये वैल्यू ग्रेटर देन वन ही होगी. एंड अगर आप केपी को केसी इंटू समथिंग मल्टीप्लाई कर दो तो केपी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन ही मिलेगी. बराबर है. अगर डेल्टा एन जी दूसरा कंडीशन ये हो सकता है डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो देन केपी इज ग्रेटर देन केसी. या तो डेल्टा एन जी लेस देन जीरो देन केपी इज लेस देन केसी. इज दिस अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? Okay, let me do one thing. Let me make it full screen for you guys so you may write it down properly. Oh, best to big.